असलो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर एजुकेशन तमाम घनी अहम हूंदी आहे थर जो इलाइक़ो तमाम अहम आहे हमेशह डिस्कस में रहंदो आहे। अॼु मूंसां जेकी शख़्सियत आहे अनिला अली साहिबा यूएसए खां आहे ऐं पाण एमवेक सां गॾु कमु कयो अथई, डेमोक्रेटिक पार्टी सां आहे ऐं कैल पार्क जेको स्कूल्स इन पाकिस्तान थ्रो कैल पार्क जेके आहिनि उन जी बि ओनरशिप उन्होंने वती है। बेहतर कम फ्लड में तमाम बेहतरीन कम किया। अनिला साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू। और मेरे साथ दूसरे अदर गेस्ट इज एडम रेनगोल्ड, CEO हाउस ऑफ रोहा। आई आल्सो वेलकम यू इन माय टॉक शो। यू आर फ्रॉम अमेरिका आल्सो। Absolutely. Thank you, Mir Saab, for having अनिला, फ्लड में आपने ज़बरदस्त एक काम किया और तकरीबन पूरा सिंध आपने जो है ना विज़िट किया है। थर भी गई हैं आप, जो है दादू भी गई हैं, केनशा भी आप गई हैं, क्या कहेंगे सवाल से? मैं ये कहूँगी कि वो जो रिहैबिलिटेशन का काम है डिस्प्लेस लोगों का, वो तो अब शुरू हुआ है। चाहे हमने 9 बिलियन भी ले ली हो दुनिया से, वो पैसे आने में बहुत टाइम लगेगा, बट इन द मीन टाइम हमें अपना रिलीफ वर्क ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त खाने की बहुत कमी है। और मैं सबको याद दिलाऊंगी कि अभी भी हमें पैसे खाना भेजना चाहिए, लोगों को ज़रूरत है, शेल्टर की भी ज़रूरत है और खाने की भी। लेकिन ये है कि ये मैंने ज़रूर सुना कि पाकिस्तानियों ने बहुत चीज़ें भेजी। पाकिस्तान केम टू द हेल्प ऑफ देयर ओन, तो इससे ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बट 5-6 महीने बाद तो लोग भूल जाते हैं, बट हम भूल नहीं सकते उनको, वहाँ ज़रूरत है हमारी। Mr. Adam Reingold, what would you say? You visit Pakistan, you are visiting Pakistan, different schools. What's your experience? You meet different peoples. What would you say about it? I would say that first and foremost, Pakistan's not alone in the challenges of education. In America, we deal with the same things, getting access to teachers, good teachers, keeping good teachers in schools. And this is something we have in common. And being in each and every one of the schools, what also we have in common is the fact that children want to learn. Children are there and they're eager. And that's clearly what I saw at each and every one of our schools that we went to, from the most remote desert to right here in Karachi. The children are really eager and excited to learn, and everyone has just been so wonderfully welcoming and open, and it's just opened my eyes to so many new possibilities in the world of just hope, and it's beautiful. How can you differentiate in a third education, the schools of a thirds in Karachi and America? How can you differentiate? They're not so different, really. And that's what I explained to the education government officials we met and have had conversations, is we have so much to learn from each other, and so many things that people in America and institutions in America have tried and succeeded with and tried and failed with. And so it's one of the reasons why I'm here, is to listen, learn, look, and see what we are doing in our schools and what we can do better so that we can provide the children of Pakistan a much better education and better future. CalPAC is doing excellent, supporting the public schools and private school, public schools in Pakistan, government schools. They are doing excellent. Mm-hmm. You see a difference any after the CalPAC supports in education? Absolutely. From every government official that I have spoken to about education, and pretty much everybody I've spoken to on the streets is very concerned about the education, the general education and welfare of the children here in Pakistan. And when you see that or hear that versus what you see at our schools, and the confidence and the pride that the children have, and the love that our teachers have for our children, you can absolutely see such a difference between the schools that have that public-private relationship versus those are just public. अनिला साहब, कैलपैक का एक बड़ा रोल है डिज़र्ट में जाके स्कूलों का। थर को आप बेहतर समझ सकती हैं, पाकिस्तान से आप हैं, आपको चारों सूबों का पता है, सिंध का पता है, आपकी एक ट्रैवलिंग रहती है। फ्लड भी था, उसके साथ स्कूल्स का भी मसला, स्कूल्स भी डैमेज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ, क्या कहेंगे? जी, इस दफ़ा मैंने वाकई पाकिस्तान काफ़ी घूमा,
और ट्रैवल किया, नॉर्थ से लेके मैं साउथ पूरा मैंने सिंध घूमा। एडम भी मेरे साथ थे और हमने ये देखा कि हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट की जो उनका काम है वो बहुत बड़ा है और एजुकेशन का काम बहुत अहम है। अगर हम सब मिल के करें, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा लोगों को करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अलग स्कूल्स बनाएं। क्यों ना वो स्कूल सिंध गवर्नमेंट के जो खाली हैं, जिनमें बच्चे वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा और उनको हेल्प करेगा, टीचर्स नहीं मिल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्यों हम एज सिटीजन्स हेल्प करें, स्टेप अप करें और उसको अडॉप्ट कर लें। जो हमने अडॉप्ट किया है वो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ है, तो एक हमें उनकी सपोर्ट मिलती है, जो काम होते हैं वो करवाते हैं। और दूसरा ये होता है कि पता है आपको, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये तो एक तरह से हमारा जो कंपनीज़ हैं उनके लिए CSR का फ़र्ज़ है कि वो सपोर्ट करें। एजुकेशन की क्राइसिस आपको पता है, फ्रॉम किंडरगार्टन राइट अप टू हाई स्कूल की भी, हमारी हायर एजुकेशन की भी कमी है, एक्सेसिबिलिटी कम है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सारी चीज़ें हमारी कम है। लेकिन हम सब मिलके अगर एक स्कूल अडॉप्ट कर लें, जो अडॉप्ट स्कूल फाउंडेशन है जो कि हमने कैलपैक के तहत किया है, तो आई थिंक काफ़ी कुछ किया जा सकता है। कितने नंबर ऑफ स्कूल्स आपके पास कितने हैं कैलपैक के? देखिए हमारे पास, हम ऐसे तो थोड़े हेल्प करते रहते हैं स्कूल्स को, लेकिन जिनको हमने अपना अंडर आर्म विंग लिया है वो 3 स्कूल्स एंड विलेजेस हैं थरपाकर में, और एक कराची का प्राइमरी स्कूल है शीरीन जुना कॉलोनी में। और हम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम 15 स्कूल्स ले लें, हम 3 स्कूल्स को इंस्टेड ऑफ बीइंग 1 क्लासरूम स्कूल, हम उनको एक्सपैंड करके मैट्रिक तक कर दें, सेकेंडरी कर दें। और विलेज में आप देखिए थरपाकर में, हम बॉर्डर पे जो हमारा स्कूल है वहाँ पर ना बिजली है ना पानी है। तो हम देखते थे, मैं जाके अपने कैलपैक के फ्रेंड्स को बोलती थी कि वहाँ पर पानी नहीं है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। अगर हम पानी नहीं देंगे तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है, तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, बीमार होंगे, हाथ कैसे धोएंगे। तो फिर हमने RO प्लांट लगाया। उसके बाद हमने सोचा कि ये बच्चे दे आर ग्रोइंग अप, एंड एक इन्फॉर्मेशन, आप कह रहे थे इन्फॉर्मेशन एज है, टेक्नोलॉजी है, दीज आर मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने कभी कंप्यूटर की शक्ल नहीं देखी होगी। तो हमने उस डेजर्ट में कंप्यूटर्स लगाए हैं बच्चों के लिए। तो मेरे लिए एक दफ़ा जब मैं पहली दफ़ा गई थी तो एक बच्चे को मैंने कहा कि नहीं तुमने आइसक्रीम खाई, आपने आइसक्रीम खाई, और वो मेरी तरफ देख रहा था बच्चा। ये आइसक्रीम क्या होती है? कि आइसक्रीम क्या होती है। फिर मैंने एकदम सोचा कि आइसक्रीम तो आ ही नहीं सकती है, डेजर्ट में तो पिघल जाएगी। तो हमने सोचा उसी पे कि हम उनको कंप्यूटर्स देंगे कि वो देख सकें कि ये है हमारी दुनिया, क्यों उनकी इतनी महदूद है दुनिया, उनके लिए खोल दो। कंप्यूटर्स यही होता है, इट ओपन्स अप योर माइंड, रीडिंग बुक्स। तो हम अपनी टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ यानी कि बहुत सारे स्कूल्स ले लें, हम क्वालिटी एजुकेशन बिल्ड कर रहे हैं। अभी क्योंकि एडम आए और उन्होंने जाके मेरे साथ ट्रैवल किया, नंगर पाकर, थर पाकर, एजुकेशन सिंध गवर्नमेंट से भी उनके बातें हुई हैं, तो ये भी मुझे कह रहे थे कि देखिए अनीला, हमें इनको स्किल्स देनी है, पढ़ा तो देंगे हम, लेकिन वो पढ़ाई फिर सस्टेनेबिलिटी क्या होगा अगर उनके पास जॉब्स नहीं होंगे हमारे थरपाकर के लोगों के। तो यही मुझसे जब से कह रहे हैं कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है वोकेशनल ट्रेनिंग का, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़रा सा ग्रेजुएट करें, मैट्रिक कर लें। तो लेट्स टीच देम हाउ टू डू देयर जॉब बेटर, लेट्स गिव देम अ स्किल कि कल को वो कराची जाएं, अगर वो बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, शेफ्स होते हैं, अगर हम उनको बनाएं तो लेट्स मेक देम प्रोफेशनल, लेट्स गिव देम दैट स्किल विद अ सर्टिफिकेट। एंड मैं समझती हूँ कि दिस इज द नीड ऑफ द डे। This is the age of this is the age of specialization. The world is changing. The world is a global village. You can visit, you can talk, you can communicate with any country, with any people in the entire world. The education system in the third on the verge of a collapse. On the verge of collapse. What's your expertise? What's your ideas? How can improve it? How can revive it? What would you say? So, first thing, I absolutely agree with Anila in
talking about the challenges that we have at Thar Parker, and to speak to what you're talking about, how do you bring a global world to a school that doesn't have internet? How do you bring a global world to children that up until recently didn't know what an ice cream cone was, but they would recite the alphabet with I being for ice cream cone, right? We in major cities such as Karachi or wherever in America know what an ice cream cone tastes like, it knows what it is, and can identify. So until Anila and the school brought it in to show them this is ice cream, they didn't know. So the real challenge is how do you teach without all the global tools that we're so used to now? And so what Anila was talking about is really the initiative we're going to be looking at going towards, which is meeting them where they are. We will not necessarily be able to bring in the internet. It's certainly something we will hope to do, but until then, we can teach them vocational opportunities and things. In America right now, as I said, we have a lot in common with what's going on in Pakistan. Some of the highest paid jobs right now are those of tradesmen. You have plumbers, you have bus drivers. All these people make extremely good livings in the United States. So how can we translate that to Thar Parker and make the people of Thar Parker's lives better, and then make Pakistan better as a whole? There is a break time. There is a commercial break. Break जो time था break हम होता जो discussion करते हैं.